Okay, this is 6-2. The mass in kilograms of a block of cheese sold in supermarket is denoted by the random variable m. The mass is of a random sample of 40 blocks. Is this calculated by estimate of the population mean and variance? Okay, ये तो simple formulas है. Okay. Um, हमने आंसर चेक किया है ना आपने बेटा. तो मैं बार बार स्विच ना कर. क्या आपने आंसर चेक ना किया वो बता देना. ओके. The price P of a block of cheese of mass m kgs is found to follow the formula. This find estimates of the population, mean and variance of P. Okay, so when I do expectation of P, it's 11 into expectation of X plus 0.5. Okay, so I get 11 into 0.5125 plus 0.5. I get 0.61375, which is 0.614. Okay, or 6.14, sorry. Oh, 6.1375. Okay, when I calculate variance of P, it becomes 11 square into variance of M. Variance of M was 0.00569. I'm just checking the rounding of error now. 5686 कर लें इसको. Okay, so 11 square into 0.5686. 68.8. Yes. Okay. That is that. Question number 2 says Andy and Jessica are doing a survey about musical preferences. The plan to choose a representative of 6 students from the 256 students at their college, and choose 6 students at random from the students who are there. Give a reason why this method is unsatisfactory. The music building will possibly only have students who study music. Okay, so that method might not be satisfactory. Let's see what the marking scheme says. It says biased towards students who play instruments or only music students. That's what I've written. For example, the 6 will possibly be friends, have similar music preferences. Okay, that's another reason. Or any reason that some are excluded because it is lunchtime or because music building is chosen, or any suggestion that opinions may not be independent. Not representative of all students needs qualifying, which means that you can't just simply say that it doesn't represent all students. You have to give me a reason. Okay. Then it says Jessica decides to use another method. She numbers all the students in the college from 1 to 256. She then uses her calculator and generates the following random numbers. From those numbers, she obtains 6 students' numbers. The first 3 of her students are 204. So that looks like that. Then 162, because 393 cannot happen. So she goes to 162. Then she goes to 007. The next Jessica's method continue Jessica's method. So I would then select
Okay, let's just wait. Is my screen lagging also? Okay, it's fine now. वो कभी कभार इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है ना, तो होता है बैकग्राउंड में. Okay, that is the random number method. If you have any confusions, you can ask. It says question number 3 then says the probability that a random spinner lands on any spin is on red on any spin is P. The spinner is spun 140 times and it lands on red 35 times. Okay. So the sample proportion looks like 35 out of 140. And Q should then be 105 out of 140. This looks like 5 over 20. Let me just calculate it. आसान number लग रहा है. 1/4. Okay, so P is 0.25 and Q is 0.75. It says calculate a 96% confidence interval. Now, it's going on YouTube. I don't generally send the PDF अभी वो फिर मुझे सर साया को भेजनी पड़ेगी. Then I'll be able to send it to you. I can send it later on. आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा, सर साया से पूछ लेना. और वैसे अगर आपको दोबारा देखनी है तो YouTube पे लाइव जा रहा है. You can play the video again and see. Okay. So I will need the Z value for 96. That means I will have to go and read 92%. मेरे ख्याल से 92% directly तो नहीं होता. So I have 1.406. 1.406. Okay. So 0.25 minus 1.406. 0.25, 0.75, 140. 0.25. 1985 आ रहा है. 0.3014. 0.0145, right? So I get 0.199. Okay, have I read something wrong? My bad. I read this wrong. मैंने 98 की जगह 92 रीड कर लिया. 98. 2.04. 2.054. Okay. पहले नोटिस कर लिया करो यार. वो इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ करने में ना कंफ्यूजन हो जाती है. ओके, सही है, हो गया.
From further experiments, Jack finds a 90% confidence interval, a 95% confidence interval, and a 99% confidence interval. Find the probability that exactly two of these confidence intervals contain the true value of P. Okay. Oh, this is a little tricky. So I have a 96% confidence interval, and I'm finding three further considerations. 90% confidence interval, a 95% confidence interval, and a 99% confidence interval. Okay, just give me a moment to calculate this, then I'm going to explain it to you. Is that getting me the correct answer? Amna, have you done this? Sorry, okay. Okay. हाँ, I'll just explain this to you. देखो, कोई भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 96% कॉन्फिडेंस के साथ क्या कह रहे हैं कि जी जो एक्चुअल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो होगा ना वो इस रेंज के अंदर लाई करता होगा। यानी 96% चांस है कि हम सही बता रहे हैं, 4% चांस है कि हम गलत बता रहे हैं। ओके, सो 96% सही होने का चांस है, 4% गलत होने का चांस है। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ दीज कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कंटेन्स द ट्रू वैल्यू ऑफ पी। तो मैंने क्या कहा कि अब ये तीन तरह के इंटरवल्स है ना। अब पहले 90% का मतलब क्या है कि 90% चांस है कि हम सही हैं, 10% चांस है कि हम गलत हैं। 95% का मतलब क्या है कि 95% हम सही हैं, 5% चांस जो है वो गलत है। तो मैंने जो कैलकुलेशंस की हुई है ना वो मैंने दो में सक्सेसफुल और एक में अनसक्सेसफुल रखा हुआ है। तो पहली जो कैलकुलेशन है वो 90%, 95% और 1% की हुई हुई है। और फिर जो है वो 90%, 5% और 99% की। फिर 10%, 95% और 1% की कैलकुलेशन है, और सॉरी 99% की। ओके, दैट्स व्हाट आई हैव डन बिकॉज दिस थोड़ा सा अनयूजुअल सवाल है इसलिए मैंने पहले सॉल्व किया, देन आई एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, गोइंग ऑन। ये कहता है certain kind of firework is supposed to last for 30 seconds on average after it is lit. An inspector suspects that the fireworks actually last a shorter time than this on average. He takes a random sample of 100 fireworks. Uh, each firework in the sample is lit, and the time it lasts is noted. Um, give a reason why it is necessary to take a sample rather than testing all the fireworks at this time. It is unrealistic to test the entire population. Okay, let's see what this says. Okay, it says fireworks are destroyed when tested. Okay, that's also something that we should consider. Okay, then it says it is given that the population standard deviation of this kind is 5 seconds. So I'm saying that mu is 30
and standard deviation is 5. Okay, I have to calculate test the instructor's suspicion. So H naught is mu is 30, H1 is mu is less than 30, 1% significance level. This is your test statistic. 1%, 99% gives me 2.326. So Z is equals to 29 minus 30 divided by 5 over root of 100. What does that give me? Just seeing if I value that gives the value right. So minus 2 is in the acceptance region. To suggest mean has decreased. Okay. State the reason whether the central limit theorem was needed in the solution to part B. Yes. Pop distribution is unknown. Okay. In a certain large document, typing errors occur at random and at a constant rate of 0.2 per page. So this looks like a Poisson question. Find the probability that there are fewer than three typing errors in 10 randomly selected pages. So lambda is going to be 10 into 0.2, which gives me 2. Fewer than 3 gives me x less than 3. So I have to calculate the values of 0, 1, and 2, e power minus lambda. Okay. Point. So maybe okay, use an approximating distribution to find the probability that there were more than 50 typing errors. When it says approximating distribution, Poisson से normal में ही जाते हैं. So more than 50 typing errors in 200 randomly chosen pages. So 0.2 multiplied by 200 gives me 40. More than 50 typing errors. So more than 50 continuity correction लगेगी तो more than 50.5 हो जाएगा. Z 3.5. 9515. Okay.
In the same document, formatting errors occur at random and at a constant rate of 0.3 per page. Find the probability that the total number of typing and formatting errors. तो total का जो lambda हो गया वो हो गया 0.3 plus 0.2, 0.5 हो गया per page. In 20 randomly chosen pages, so 20 randomly chosen gives me 20 into 0.5, 10 आ गया ये. So yeah, 10 is still less than 15, so I'm going to still keep using the Poisson distribution. Inclusive का हुआ है तो 8, 9, सही. ये बनेंगे e पावर -10 और ये बन रहा होगा 10 पावर 8 over 8 factorial plus 10 power 9 over 9 factorial plus 10 power 10 over 10 factorial plus 10 power 11 over 11 factorial. Okay, I'm going to do this on my calculator. Now you've calculated the total 0.477. मैं चेक कर लूँ इंतफा ये है ना सही. Okay, thank you. Question number 6. A machine is supposed to produce random digits. Bob thinks that the machine is not fair and the probability of it to 0 is less than 0.1. In order to test his suspicion, he notes the number of times 0 occurs in 30 digits produced by the machine. He carries out the test at the 10% significance level. So null or alternate talking about proportions. So 0.1, which one is less than 0.1? Okay, that's what is being tested. So P लिख दिया मैंने एक ही बात है. I think I'm going to get marks. Okay. So then I go on and test, find the rejection region for the test. So whenever you're trying to find the rejection region, this is a question on trial and error. Okay, अब ट्रायल एंड एरर देखते हैं. उसने कहा कि n जो है वो आपके पास 30 है और आपने जो है वो he carries out the test at the 10% significance level. तो अब किस नंबर से स्टार्ट किया जाए? मैं कहता हूँ टिपिकली आपको क्या करना चाहिए, आप 0.1 into 30 कर लें. आपने कहा पॉइंट x is less than or equals to 3 में कैलकुलेट कर लेता है. इसका मतलब क्या है कि मुझे 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी कैसे बाइनोमियल लगा के कैलकुलेट करनी पड़ेगी. So I have to do 30C 0.9 power 30.1 power 0. I'm not writing the entire thing. On the exam, you're certainly going to write the entire thing. मैं अभी calculator use कर रहा हूँ अपना calculate करने के लिए. My white calculator can do this directly. So it sort of makes it easier for me to use do trial and error. Okay. यार ये 0.6474, which is a very large number compared to 10%, right? So मुझे drastically इसको reduce करना पड़ेगा. मैं इसको reduce कर देता हूँ 1 पे ले आता हूँ. X is less than or equals to 1 कर लेते हैं. तो यार है point I think I've done something wrong. एक मिनट शामिल में बता रहा हूँ. अच्छा नहीं मैंने सही किया. ये भी आ रही है 0.184. ओके तो मैंने कहा नहीं वो x is less than or equals to 0 ही करना पड़ेगा. तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो रिजेक्शन रीजन के अंदर आएगी. is less than 10%. So rejection region is technically just 0, or I can say x is less than or equals to 0, which basically means probability of 0. Let me answer Shamir's question first. Shamir, बाइनोमियल की टेस्टिंग में या पॉइसन की टेस्टिंग में जब भी आपको रिजेक्शन रीजन ढूंढना है, अब इस क्वेश्चन में नोटिस अगर आप करो तो कोई टेस्ट स्टेटिस्टिक नहीं गिवन, इसलिए वो रिजेक्शन रीजन आपसे पूछ रहा है. कभी कभार वो डायरेक्ट टाइप 1 एरर कहेगा. तो जब भी वो कहेगा तो उसमें आपने जो है वो ट्रायल एंड एरर करना जरूरी है, तभी आपको रिजेक्शन रीजन का स्टार्ट पता चलेगा. अब यहाँ पे देखो मैंने पहले लेस देन और इक्वल्स टू 3 कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला 0.6474. मैंने कहा ये तो 10% से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो रिजेक्शन रीजन इतना आगे तो नहीं हो सकता. रिजेक्शन रीजन को 10% से कम होना चाहिए. तो मैंने फिर लेस देन और इक्वल्स टू 1 करके देखा
फिर मैंने लेस देन और इक्वल्स टू 0 करके देखा तो मुझे पता चला जी रिजेक्शन रीजन हो गया। अब ना आप क्या पूछ रहे हो, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नंबर दैट टेल्स यू कि आपको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सही है। और मैंने ये बता दिया कि कब आपने नेसेसरीली ट्रायल एंड एरर यूज करना है, जब भी आपने बाइनोमियल और पॉइजन की टेस्टिंग में रिजेक्शन रीजन को ढूंढना है। ओके, state the probability of a type 1 error. So type 1 is basically probability of rejection, which is in this case 0.0424. Okay. Okay. It is now given that the machine actually produces 0 once in every 40 digits. तो यानी आपका जो वो आया वो 1 in 40 आ गया, यानी नया proportion जो आया new p is 0.025. When you're calculating the probability of a type 2 error, probability of acceptance, अब इसका एक्सेप्टेंस क्या होगा, अगर रिजेक्शन इसका लेस देन और इक्वल टू 0 था तो इसका एक्सेप्टेंस ये होगा। अब मैं निकालूंगा 1 माइनस 30 से 0, कितना बनता है 975। Can you check if this working is correct? सही आ रही है ना वर्किंग 0.53 पे। Okay, explain the meaning of a type 2 error in this context. Okay, so the context was that biased. ओके और ये जो है वो जीरो ज्यादा कम प्रोड्यूस कर रही है। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 नहीं है। सो टाइप 2 एरर क्या होता है, इट्स द प्रोबेबिलिटी, ओके, टाइप 2 एरर is accepting H naught when H naught is false. Okay, in context, concluding that the machine is not biased when it actually is. So yeah. Then this is the last question. It says the probability density function of a random variable x is given by this. So that this. So whenever you want to find an unknown, you integrate on the entire limit and say that this is equals to 1. You're going to get k for x square over 2 minus x cube over 3. Eight minus x over 3, 24. सालार को मैं इस वीक में किसी दिन करा दूंगा। अभी मैंने 2 पेपर तो ऑलरेडी कर लिए हैं, मैं थक गया। ओके, मैं करा दूंगा लेकिन। Okay, find expectation of x. So this becomes x f of x. So 3 over 16 मैंने बाहर निकाल लिया. So this becomes x into 4 minus x. So 3 over 16, 4x squared
अ, जी बेटा, 10:30 से क्लास स्टार्ट हुई थी सारा साला। और यूट्यूब पे जा रहे हैं लाइव। ओके, रिकॉर्ड हो रहा होता है। Okay, thank you. 5/4 is the final answer. Then it says the random variable y has the following properties. Y takes the values between 0 and 5 only. The probability density function of y is symmetrical. Given that probability of y equals to 0.2 and probability of 2.5 to 5 minus a. Find probability of y between illustrating your method with a sketch on the axis provided. सही है, तो मैंने कहा एक सिमेट्रिकल से मैं ग्राफ बना लेता हूँ ना। कैसा भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि भाई सिमेट्रिकल उसने कहा। ओके, मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है। ओके, फिर 2.5 जो होगा वो उसके बीच में आएगा बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल। एंड आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 5 माइनस ए। तो 5 माइनस ए जो होगा वो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ओके, so can I say that this probability, this yellow probability is also 0.2. Okay, so this red one becomes 0.5 minus 0.2. This becomes 0.3. Okay, so I'm going to say that I got right. 2.5 between 5 and 5 minus a is 0.3. Okay, let me check if that's the correct answer. मैं दोबारा बता देता हूँ. Okay, that's the correct answer. ओके, ये देखो, मैंने कहा कि भाई कोई एक रैंडम जो है ना वो सिमेट्रिकल मैंने ग्राफ बना लिया। सबसे रैंडम सिमेट्रिकल ग्राफ जो मुझे पता है, मतलब सबसे इजी जो सिमेट्रिकल ग्राफ मुझे पता है वो एक क्वाड्रेटिक होता है। मैंने कहा कि भाई एक छोटा नंबर है। छोटा नंबर क्यों है? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 आ रही है, तो वो कहीं शुरू में है। मैं कहा यहाँ पे ए मार्क कर लेता हूँ। फिर ये 2.5 कहाँ पे आएगा? ये 2.5 तो एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए बिकॉज सिमेट्री क्रिएट करनी है मुझे। जब मैंने सिमेट्रिक क्रिएट कर लिए तो उसने कहा कि भाई ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ जो 5 माइनस ए और 2.5 के बीच में। अब 5 माइनस ए कैसा नंबर होगा? अब इमेजिन कर लो भाई ए जो है वो कोई भी नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ए 1 है, तो ये 5 माइनस ए क्या हो जाएगा? ये 5 माइनस ए जो हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। ओके, तो मैं आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा हूँ? 2.5 से 4 के बीच में। अब मुझे पता है कि क्योंकि सिमेट्री क्रिएट हुई हुई है तो जो 1 से कम की प्रोबेबिलिटी थी वही 4 से ज्यादा की भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने कहा कि ये वाला रीजन जो हो जाएगा वो 0.2 हो जाएगा। अब ये वाला रीजन अगर 0.2 हो गया और ये सिमेट्रिकल है तो ये वाला जो होगा वो 0.5 हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं 0.2 माइनस कर दूं तो ये 0.3 रह जाएगा। सही? हाँ, सिमेट्रिकल है ना, तो दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी बराबर होगी और वो पॉइंट्स भी बराबर होंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ होगा। सही है जी। एंड ऑफ एग्जाम, कैन वन ऑफ यू गाइस जो सर साया के स्टूडेंट्स है, कैन यू डू मी अ फेवर एंड टेल सर साया कि हमने कौन से वाले